Well, hi there. Warm welcome. You're watching Blueprint Explosive Exclusive with me, Meghna Deka. Well, as Delhi's bad air days are back to haunt the citizens living in the national capital. Well, as stubble burning rises in Punjab, the air quality in Delhi has plummeted and has neared the severe plus category. In fact, in the wake of this air emergency, Delhi LG VK Saxena has written to the Punjab Chief Minister Bhagwant Mann, urging him to take urgent and substantive steps to control cases of stubble burning in Punjab. In fact, in his letter, the Delhi LG has written that smoke from Punjab has turned Delhi into a gas chamber and that the resultant situation has left the Delhiites struggling with breathing difficulties. Now, while Saxena has blamed the Punjab government as the major cause of Delhi's worsening air quality, Arvind Kejriwal, in a joint press conference with the Punjab Chief Minister, said that it was a problem faced by the whole of North India and not just in Delhi. Listen in. केजरीवाल इसका जिम्मेदार नहीं है, केवल दिल्ली और पंजाब की सरकारें इसकी जिम्मेदार नहीं है। इसके कई सारे कारण हैं, कई लोकल कारण हैं, कई रीजनल कारण हैं। एक राज्य की हवा एक राज्य में नहीं रहती, इधर से हवा उधर जाती है, उधर से हवा इधर आती है। तो जैसा हम कई बार कह चुके हैं कि इसमें केंद्र सरकार को आगे आके इसके ऊपर स्पेसिफिक कदम उठाने पड़ेंगे ताकि पूरे उत्तर भारत को प्रदूषण से बचाया जा सके। ये पूरे उत्तर भारत की समस्या है। Meanwhile, BJP has trained its guns on AAP government, accusing them of having failed to tackle the pollution woes of the national capital. Caught on the back foot, Arvind Kejriwal acknowledged that Parali fires incidents have increased in Punjab, but has said that the AAP government was doing everything possible to bring it under control. ये वक्त फिंगर पॉइंटिंग का नहीं है, ब्लेम गेम का नहीं है, एक दूसरे को गाली देने का नहीं है, इतने सेंसिटिव मुद्दे पे राजनीति करने का नहीं है। पंजाब में पराली जल रही है, हम मानते हैं पंजाब में पराली जल रही है, इसके लिए किसान जिम्मेदार नहीं है। पंजाब में हमारी सरकार है, अगर पंजाब में पराली जल रही है उसके लिए हमारी सरकार हम जिम्मेदार हैं। हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि पंजाब में अगर पराली जल रही है। हमारी तरफ से 1,20,000 हैप्पी सीडर्स बोलते हैं उसको, वो मशीनें चल रही हैं। मशीनों की अवेलेबिलिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम गुरुद्वारा साहब में भी अनाउंसमेंट करवाते हैं, तो हम एफर्ट्स में कोई कमी नहीं छोड़ रहे। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे कि राजनीति नहीं करनी चाहिए। आपने सुना है ना, आज पूरे जीवन राजनीति करके पिछले वर्ष कह रहे थे, जब पंजाब की सरकार नहीं बनी थी, जब हम पंजाब में आ जाएंगे, जब हमारी सरकार बन जाएगी तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। 5 वर्षों में केंद्र सरकार ने 1,350 करोड़ रुपए क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट के लिए पंजाब सरकार को और अन्य सरकारों को दिया है, जिसमें पंजाब ने 1,20,000 मशीन खरीदा। और आपको जान के आश्चर्य होगा, लगभग 12,000 मशीन गायब हो गया, चोरी हो गई, पता नहीं कहां चला गया, मिल ही नहीं रहा। In fact, Times Now has also confronted the Punjab Agriculture Minister on the rising stubble burning cases, but he seems to, instead of giving straight answers, evade our questions. सर मेरी बात सुनो, जब मैं पराली पे पीसी करूंगा तो फिर आ जाना। देखो कितना जबरदस्त नहीं सर, जब मैं ऐसा नहीं मैं करूँ, नहीं आपने एयर क्वालिटी देखी पंजाब की? देखी है, फिर क्या बात करते हो? हरियाणा से अच्छी है, पंजाब दिल्ली से अच्छी, सभी से अच्छी है, एयर क्वालिटी नंबर 1 है। आप मत के बताओ, कोई बात नहीं है कि यार छोड़ो यार, कोई है मेरे साथ छोड़ो यार, और बड़े। Now, Haryana, where stubble burning instances have come down considerably compared to last year, but also has now hit out at the Punjab government, accusing them of not giving any incentives to the farmer to stop parali burning. किसान जिम्मेदार नहीं है, किसानों के लिए इन्होंने कुछ दिया ही नहीं, कुछ किया ही नहीं, इंसेंटिव नहीं दिया। हम पैसा दे रहे हैं किसानों को, अच्छा मूल्य देने की बात भी कर रहे हैं। शुक्र है कि वहाँ दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है, बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, वरना वो ये भी कह देते
कि दिल्ली में कोई पॉल्यूशन नहीं है, ये लोगों को भ्रम हो गया है। शिक्षा लेनी है तो हरियाणा सरकार की जो नीतियां हैं उनसे ले लें। और किसान मजबूर है कि उसको अगली फसल बोनी है, लेकिन उसके लिए व्यवस्था करना सरकार का काम है। फेल किसान की गलती नहीं है। Well, let me go across to our panelists. Joining us today, Vineet Goenka, the spokesperson with the BJP. Aqeel Khan is joining us, a political analyst. Mr. Goenka, my first question is to you. Is it fair on the people of Delhi that the Punjab AAP government fails to stop Parali fires? Then Delhi gets into a lockdown. Everything's shut. Madam, tell me, this is only the first time is the quite Parali unfortunate burning situation. We'll just come to you, Mr. Aqeel Khan. Let Vineet Goenka first answer. So Ram to you and to everybody who's watching this particular debate. It is very unfortunate that Delhi does not have a full-time health minister. The health minister is right now in jail because of the obvious reasons. The situation is very grim. The chief minister who visited Delhi today for a couple of hours was not ready to listen. He has not given time to anybody to do. The situation is such that today we have lost many lives here because of pollution. We have been requesting the chief minister and his party so that we can meet experts. Our people would like to meet him and discuss, is there any solution? Can there be a solution? Our request is that they should come out and stop Parali burning in Punjab. A. B. The illegal effluent industries, the industries which are throwing out pollutants in the air from Silampur and Okla, they should be stopped immediately. Unfortunately, the chief minister is not available in Delhi. He is not meeting us, neither he is meeting citizens of Delhi. So my request through your channel would be, he should meet people of Delhi, he should meet experts and find out some solution. I'll give you one figure. In the first 151 days of 2022, I'm not talking about this Parali season, I'm talking about the non-Parali season, 114 days was severe. So right. Delhi has been under this severe condition, and the last 2 years have been worse in my life. So I think they should come out, they should do something rather than doing some political statements. Aqeel Khan, isn't that the problem? Instead of long-term solutions, what we have is a lockdown. Instead of stopping Parali burning, simply put in odd even, simply stop the primary school. That's a knee-jerk reaction at best. Madam, tell me, is there any central government agency or environment minister in our country? I don't see him anywhere in the TV channels, and he's not making any kind of solution or cooperation for prevention of this pollution. You see, Parali burning has been going on in Punjab for so many years. If they would have done it, some preventive measures some years back, then now this problem would have been solved by now. And our Chief Minister, Mr. Man, has said very clearly, this is only 6 months we are into the governance of Punjab. And he has given very clearly, clear time that next year, November, we will be able to improve and then solve most of the problem of the Parali burning. That is a very big statement. Nobody in our country is doing, including our environment minister, any kind of such statement and commitment. He has given the commitment. And now, apart from that, this is not only Delhi. You will find everywhere in our country, every big city. It's interesting because such commitments had been coming in the past as well. Last time also, when Delhi was choking, the Sarkar, which has been in power for the last 7 years, had been making several commitments. Now, we all live in Delhi and we all know those commitments have not been fulfilled. We'll come back to you. Meanwhile, let's also tell our viewers how Delhi is, of course, battling with this health emergency. The Environment Minister Gopal Rai has announced several of the restrictions as well to try and help the Delhiites at least breathe a sigh of relief. In fact, in this, 50% of the Delhi government employees will do work from home, while private offices have also been advised. It's not mandatory, but have been advised to follow suit. A plan will also be put in place for staggered timings for markets and offices, and odd even traffic restrictions might also make a comeback if required. Now, those are the steps which have already been put in place. So, while the Aam Aadmi Party government has assured all of a solution to stubble trouble, this is what the Environment Mantri is saying. दिल्ली सरकार के अंदर जो वर्कफोर्स है 50% वर्क फ्रॉम होम करेगी। जो प्राइवेट दफ्तर हैं उनके लिए भी हम एडवाइजरी जारी करने जा रहे हैं कि वो भी इसको फॉलो करें। जितने भी लोग हैं
जो अभी तक वाटर स्प्रिंकलिंग का काम कर रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन बैन को मॉनिटर कर रहे हैं, उन सारे कामों को डेली बेसिस पे रिपोर्टिंग करने का आप सिस्टम बनाया गया है, उसको निर्देश दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऑलरेडी दिल्ली के अंदर जो प्राइमरी स्तर के स्कूल हैं उसको बंद करने का और उसके ऊपर के कक्षाओं के आउटडोर एक्टिविटीज़ को बंद करने की घोषणा ऑलरेडी कर दी थी। Well, in fact, at a time when Aam Aadmi Party's put out its defence, the BJP has lashed out at it. Very skeptically has said that such promises have been made several times in the past and they've also failed to bear any fruit. Listen in. अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे कि राजनीति नहीं करनी चाहिए। आपने सुना है ना, आज पूरे जीवन राजनीति करके पिछले वर्ष कह रहे थे जब पंजाब की सरकार नहीं बनी थी, जब हम पंजाब में आ जाएंगे, जब हमारी सरकार बन जाएगी तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आप देखिएगा अगले दिन से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। पंजाब में विगत वर्ष से 34% का इजाफा है, पराली जलाने में 34%, इंक्रीज ऑफ 34%। 5 वर्षों में केंद्र सरकार ने 1350 करोड़ रुपए क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट के लिए पंजाब सरकार को और अन्य सरकारों को दिया है, क्रॉप रेसिड्यू पराली मैनेजमेंट के लिए, जिसमें पंजाब ने 1,20,000 मशीन खरीदा और आपको जान के आश्चर्य होगा लगभग 12,000 मशीन गायब हो गया, चोरी हो गई, पता नहीं कहां चला गया, मिल ही नहीं रहा। So the blame game between the state and the centre continues. Let me go to Neelashish. Neelashish, you joining us from Delhi. It's important for us to understand, is the capital ready for more punishment? Many are calling it capital punishment. After all, it is the people of Delhi who have to bear the brunt of these curbs. Absolutely. At this point, I'm with certain people like that, people who own ठेलास, people who run autos, who drive auto rickshaws. आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जिस तरह से प्रदूषण की दिक्कत आ रही है, सरकार कह रही है कि दुकानें बंद कर देनी चाहिए, ऑड इवन ले आना चाहिए, पर ये आपको लगता है कि कोई सोल्यूशन है? ये कोई सोल्यूशन नहीं है। सरकार को चाहिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सही करे ताकि लोग अपनी गाड़ियाँ कम से कम निकालें, ठीक है ना। इनका अपना ट्रांसपोर्ट तो सही नहीं है। अब मान लो सपोज करो कि अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सही होता, ठीक है ना, मेरे को आने में 50 रुपए, जाने में 50 रुपए लगते हैं। ये बताइए आप कि अगर सरकार कहे कि आप अपना दुकान चलाना बंद कर दे, बाहर ना आए, पर ये पराली पे बात नहीं कर रहे, ऐसे थोड़ी हो सकता है। ये सरकार का काम है, सरकार बंद करे, ठीक है ना, जिससे पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है ना, गाड़ियां कम करे, ये तो सही है। अब वो कहते हैं दुकानें बंद कर दो, ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे दुकान बंद आप क्या कहेंगे? आप भी ऑटो चलाते हैं, किस तरह से दिक्कतें आ रही हैं, क्या सोल्यूशन है? सरकार कहती है ऑड इवन कर देंगे, ये सोल्यूशन लग रहा है आपको? नहीं जी, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। मैं तो ये कहूँगा जो पराली जो जल रही है पंजाब में जल रही है, अभी केजरीवाल जी पहले बोलते थे जब वहाँ कांग्रेस की सरकार थी कि भाई पराली बंद कर दीजिए, यहाँ पर पोल्यूशन बहुत हो रहा है। आज उनकी सरकार है, आज उनको चुप बैठे हुए हैं। अब ये कहते हैं कि ऑड इवन और ये दुकान, इससे थोड़ी कुछ होगा। आंखों में जलन इतनी होती है, हमें पता है। पूरे दिन जब 8-10 घंटे का ऑटो चलाते हैं तो चला के देखे केजरीवाल जी, उनको तब पता लगेगा। बोलने से कुछ नहीं होता है, ऐसा करने से कुछ नहीं होता। आप क्या कहेंगे, कैसी दिक्कतें आ रही है आपकी? बहुत फेस करना पड़ रहा है, बहुत सामना करना पड़ रहा है। उससे ये हमारे गले में धुआं लग रहा है, आंखों में लग रहा है, हम बिल्कुल अपना शॉप्स वगैरह। और ये स्कूल बंद करने से, दुकानें बंद करने से, ऑड इवन करने से हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा। ये सब पराली की समस्या है, उसको सॉर्ट ऑफ करना पड़ेगा। ये सरकार को जल्द से जल्द सुझाव लेना। Well, there, Meghna, you can hear the people of Delhi, the common man problems and what they say should be done. Absolutely. If the problem's in Punjab, why is Delhi going into a lockdown? Why should the people of Delhi suffer even more than they already have? Let's open this up. Let's go across to our viewers. It's a simple question. Is Delhi ready for these anti-pollution curbs? Joining us, our viewer Abha Krishnan as well as Matthew. Abha, I'll come to you first. I believe you're joining us from Chennai. What would you like to say? Yeah, good evening to you. Good evening. Good evening to you and all the panelists. And what my question is to Aqeel Khan ji. Oh, well, there seems to be a bit of a problem. Let me go across to our viewer Matthew. He's joining us from Bengaluru. Go ahead, Matthew. Good evening, Meghna. Am I audible? Yes, you are. Good evening. Yeah. I've got
quick 4 points to make. The first thing is that this blame game between the state and the center has to be stopped. That's the first thing. The second thing is, what we are finding is there is no political will, both from the center as well as the state. That is the biggest issue. Now, the solution for this is we need the center and the state to come together and find a solution. They have to come out with a proper plan, which has to be under the supervision of the Supreme Court. Okay. And the fourth thing is that if they don't adhere to it, the concerned politicians, whoever it might be, a strict punishment should be joined with that. Oh, very relevant points that you have made, that there must be accountability, not just empty promises. And the accountability must come right from the top of the political ladder. Thank you so much for joining us. Venkatesh, our viewer, calling us from Bengaluru. Go ahead, Venkatesh. Yeah, thank you very much, Times Now, for having me on the channel. I just wanted to state that Aam Aadmi Party and Kejriwal are openly doing fraudulent activities by declaring this choking which is happening in Delhi as if it is not their problem. They had problems with Diwali celebrations, due to which they kept on saying there is pollution, which unfortunately has been proved wrong. Now due to Parali, it is becoming a problem now. While Kejriwal keeps on declaring 300 units free without center's intervention, the moment there is a problem, he starts blaming the center for his problems. Okay. So essentially, point taken, this blame game must stop. Long-term solutions must come in. The state should stop blaming the center should stop blaming the state. At the end of it, it is the people of Delhi. They're the only ones who are really suffering. Thank you so much to all the viewers who've been calling in. Also, Mr. Vineet Goenka as well as Aqeel Khan for joining us here on the show. Without a short break, but this continues to be time.